अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक्कास है। आप सब भाई कैसे हैं? ठीक है। इट विल बी अनफेयर टू नॉट टू टॉक अबाउट बीटीसी। और वैसे भी एक न्यूज़ इवेंट है, पैनिक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट बीटीसी। उससे पहले मैं डॉज के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। ये आपके पास डॉज है। आई थिंक डॉज एक आइडियल आइडियल मूव डॉज ने लिया था। सो आई सपोज के डॉज हैज़ द पोटेंशियल टू कम बैक इनटू दिस एरिया, स्पेशली more likely, मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, probably in this area. This is where one should look for dodge. 78 to, this is the area I think. So I am the max it can come. If it comes here, that's an ideal time to approach. But this high probably will hold dodge, and I think dodge has the potential to come one more time here to 0.186 to 183, and it can rule here. Anyway, अब BTC के बारे में बात करते हैं, या पहले FTT के बारे में बात कर लूँ। FTT का एक हाइप चल रहा है, और FTT के बारे में कह रहे हैं कि there's a ongoing डिबेट SBF की इंसॉल्वेंसी के बारे में. So one thing I would like to tell you, पहले हम BTC देख लेते हैं, then I'll explain. I think one thing we all have to understand, Alhamdulillah, one thing we have to understand that जिस चीज़ को हमने समझना है वो है panic. Sorry. The thing that I want to explain is that panic creates opportunity. All right? Panic creates opportunity. Remember that. So अब इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना पड़ता है कि डू नॉट गो ब्लाइंड ऑन एनीथिंग. हमें किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए. मैंने आपको पहले भी हमेशा जिक्र किया है, ये प्राइस जो है ये रैंडम नहीं होती. यानी मैं बोलूँ कि यार प्राइस ने ये लो हिट किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट वो लूना का केस. नो, प्राइस वाज सपोज्ड टू कम हियर. Price was supposed to sweep these lows. Price was supposed to fill these gaps. उसने ये गैप फिल करने थे, एंड उन्होंने यूज पैनिक को किया है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रियलाइज कि प्राइस का क्या मूवमेंट होती है. टुडे आज फिर पैनिक है, और आई डोंट फील लाइक कि हम बीटीसी के बारे में डिस्कस किए बगैर वो कहते हैं. वेल, एज यू कैन सी बीटीसी में जो देख रहा हूँ, बीटीसी का मार्केट स्ट्रक्चर, बीटीसी एक मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है. दैट्स द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक. ठीक है, अभी इसमें प्रॉबली 15 घंटे का टाइम है, बट प्राइस जो है एक स्विंग लो को ब्रेक करने लगी. दैट्स अ स्विंग लो, और हम इसको स्विंग लो भी कह सकते हैं. और ये मेरा फेवरेट ट्रेडिंग पैटर्न है कि मैं जब प्राइस को देखता हूँ कि प्राइस एक एक्यूमुलेशन करती है, ड्रॉप होती है, हाई बनाती है, और वायलेंट ड्रॉप होती है स्विंग लो से. तो में से जो भी मूव अप होता है इन दिस रेंज, मतलब अगर मुझे एक अप मूव मिलता है, फॉर एग्जांपल आई गेट एन अप मूव, अगर ये बहुत बेरिश होगा तो इससे ज़्यादा ऊपर ही जाए, एंड देन इट मेक ए न्यू लो. मैं इस लो को टारगेट करता हूँ, एंड दिस विल प्रोबेबली हैपन. लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, हमने ये देखना है कि जब ऐसा मूव होता है, क्या इस मूव ने जो टारगेट अचीव करना था, क्या वो अचीव कर लिया. सो आई थिंक दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. देयर इज़ अ बिग गैप हेयर. ये बीटीसी का एक गैप है जो कि बीटीसी ऑलमोस्ट फिल कर रहा है. दैट्स द गैप. सो मेरा क्या इंटरेस्ट है. यस, हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी थोड़ी सी जनरेट की गई है. दैट्स द लिक्विडिटी generated here. So lots of things being told here.
But the important structure that I am looking for is this one. This is the important एरिया. इससे हमें ऊपर जाना है. प्राइस इससे ऊपर रह नहीं सकी. ड्रॉप बैक. दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया. सो प्राइस को इससे नीचे नहीं आना. सो दीज आर द टू फाइट जोन्स. ऑब्वियसली लोग इस एरिया में नजर रखते हैं, बट आई सी दीज एरियाज. इस एरिया में और इस एरिया की बैटल है. जब भी प्राइस इस एरिया की तरफ जाई है, ड्रॉप हुई है. नाउ प्राइस ने इसके ऊपर, आप देखें, प्राइस tried to hold above it but failed, and then it dropped back. So I think next attempt is going to be a very strong attempt if that happens. And I'm still bullish on this market. I still think there are enough liquidity sitting above here. आपने ये liquidity fill कर दी है. That's the perfect fill. And it dropped pretty normal. ये ऐसा होता है. और I've seen it already. सो नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? देखिए बीटीसी का जो इम्पोर्टेंट एरिया है, लेट्स गो टू द वीकली, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इस वीकली कैंडल में भी 5 डेज हैं, एंड द एरिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम लुकिंग एट इज दिस गैप. ये हमारा एक बहुत अच्छा गैप है. दैट्स द गैप जो 20,000, 20,421 एंड 19,762, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, एंड दैट इज आवर सपोर्ट. सो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं इस चार्ट को देखकर या मैं अपना ओपिनियन बना रहा हूँ, आई डोंट वांट द प्राइस टू क्लोज बिलो दिस लो. ये मेरी रेड लाइन है. दैट्स माय रेड लाइन. ठीक है. माय बायस विल टर्न negative if price will close below this one, which I don't think that is going to happen. I think this is an opportunity. Let's turn it into a blue one. मेरा opinion ये है, that's an opportunity in my personal opinion. और पैनिक क्रिएट किया जा रहा है. ये अल्मेडा और ये जो बाइनेंस के हेड की जो फाइट है, I don't make it more visible. What I'm seeing is the chart. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो 6:30 10th of November को CPI रीडिंग है. ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. और अगर आप देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.9% के ऊपर. ठीक है, ईयरली और मंथली 0.5%. दे आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप. मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ड्रॉप, बट मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा हूँ. और ये जो ड्रॉप होगा, दिस विल लीड दिस रैली. सो टाइमिंग इज परफेक्ट. ऑल वी हैव टू डू, मैं अब जो मैं लो टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ. I'll show you what I'm seeing here. मैं सरप्राइज नहीं हूँगा. I will not be surprised कि हम एक लो और बनाए. I will not be surprised. I think कि प्राइस इस एरिया को बैंक कर सकती है दोबारा. ठीक है, या इस हाई पे जा सकती है, या जहाँ भी. But I think there is a chance that हम ऊपर जाए और एक न्यू लो बनाए, या इक्वल लो बनाए, या relatively इक्वल लो बनाए, and then we will go up. बट व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरा जो ओपिनियन ही है, हम ये मैं नहीं चाहूँगा, इन लोज को भी स्वीप कर सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट आई स्टिल बिलीव वी आर गोइंग टू द हेड्स. मैं ये चाहूँगा कि ये लो स्वीप हो जाए. दैट विल क्रिएट ईजी थिंग फॉर मी. यस, देयर इज इनफ वॉल्यूम इन इट. सो लेकिन जो मैंने ये जो दो लाइन ड्रॉ की हैं, इफ यू कैन सी, दिस इज द इम्पोर्टेंट एरिया. दिस ऑर्डर ब्लॉक कह लें, दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक that is holding the market and that initiated that move. प्राइस ने टारगेट को हिट किया है. देयर इज अपॉर्चुनिटी कि हम मे भी एक आधा और लोस बनाए, रिलेटिव इक्वल लो, एंड देन वी गो अप. एक ये भी हो सकता है, या फिर हम यहाँ इस एरिया में कंसोलिडेट करें, एंड देन विल स्टार्ट मूविंग अप. बट माय ओपिनियन इज दैट कि वी आर गोइंग अप. आई एम नॉट सेइंग वी आर गोइंग डाउन. यस, दिस इज अ मैसिव ड्रॉप, लेकिन हम एक सपोर्ट एरिया में आ गए हैं, एंड दैट्स आवर सपोर्ट. अगर हम देखें, दैट्स आवर सपोर्ट. और मुझे इस प्राइस, ये बहुत हेल्दी प्राइस एक्शन है. ये प्राइस एक्शन बहुत हेल्दी है, क्योंकि इधर प्राइस चॉप होती है. इट्स अ बिग सपोर्ट एरिया. मैंने आपको पहले भी बताया था. मंथली, अगेन मंथली है, दिस मंथली कैंडल विल टर्न ग्रीन इंशाल्लाह. मैंने आपको पहले भी बताया था
कि हम that this is the most important area of support. These areas, these are the most important area of support. BTC ने एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल्स किसी एक एरियाज में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज $20,000 और $19,949. I don't think so. This area of defense will go down like this because ये monthly level है. So हमें इसको month के बाद देखना है. So I'm waiting for it. But my personal opinion is this price action looks so healthy. Yes, this is a panic drop. और एक दो तीन, this is a 3 candle move. Usually ये candle move के बाद price, यानी मैंने देखा है कि price consolidate करती है इस area में या इस area में. So I'm looking for a consolidation, and that consolidation is what leads to the price to move to the upside, and this is what I'm looking at: a consolidation and a price should move to the upside. This is what I think, because the objective of this is the liquidity, and that gap is being filled. Now, it would be more dangerous. It would be more dangerous if price breaks this low and break below it and close below it. That's where the risk starts. That's where the, जैसे कि हमारा ये लो था, if you can see प्राइस ने इस लो से नीचे कभी भी ब्रेक नहीं किया. Same goes with that low. So price is holding a case of an upper lows, and अगर हम इसको parabolically draw करें, so this is still a holding move. Price is still holding some curve in the market, and which is good for the market. And obviously मैं इन lines का इतना बड़ा fan नहीं हूँ, but still we are holding a line here. So normally this line, अगर ये parabolic होना है तो this line will turn into this line, and then this line will turn into this line. Like हम parabolically move करें, like हम price को इस line पे लेके जाएं, then we go like this. This is what my opinion is. दूसरी बात जो FTT की है, I think FTT is kind of holding its structure, and FTT, not yet bearish on it, not bullish on it, but I think FTT has this area that I have marked it down. These are the areas which been tested by FTT. I would not say FTT will go below this area. I was very surprised that FTT will break below 13,272. It's an ideal position to probably to get into the market. Panics is extreme hai, lots of panic in the market, but I see that's an opportunity, and that's a big opportunity. Yeah, that's the gap. That's a big opportunity. It could be a trap, in my opinion, or it could be a trap. So the best way to trade it is to wait for price to hold this low again. Yes, if you are not a I would like to see a price will go above it. Okay, first come here, go above it, and then come back here. This is where you have to be inside the game. जैसे कि there is a case of EDA. I'll show you what EDA did. It's a great long. It's a great long with EDA, as you can see. That's the great long. It went down and then we went above. Now we are trying to close, and if you can see, price closed first candle above it. So I expect the ADA will close the next candle above it. So that's a great opportunity to be in ADA, in my opinion. This is a great opportunity, I think, to buy ADA between these areas. I think, like, if you're bullish, in my opinion, I'm bullish. I'm looking for this opportunity. I would like to see the price to hold this. If I'm extremely, मतलब मैं अगर अपने आप को extremely bullish करूँ, तो I would like to see price hold 40 cents.
and then my next target is nothing else. It's 59 cents. So that's the um, move of like this one. So stick with opportunity. I think you should look for the opportunity. It's a barrel of because ये एक रेंज है, रेंज में प्राइस ऐसे ही करती है, and I think price is ranging in it, and I have seen such kind of a price action before. So the best way to trade or you want to make money is wait for the price to close above it. Historically भी BTC ने ऐसे बहुत दफ़ा किया है. I'll show you. But first we have to wait for the price. Don't jump into any conclusion right now. Yeah, in that case, as it drops, ये drop हुआ. I would not like them to. I would not. I would mind this to be taken out. And the best way for us to see this price action, I show you where the price created an upside move and a downside move all of a sudden. जैसे यहाँ हुआ था, as you can see, it happened here. We had a move. We created a we created a range here. Then we have upside move. Then we had a downside move, and then price move up. That's how the price moves and behave like this. Yes, in that case, we created something here, and then we move up, and when we draw back, and we have the support here. The beauty is that we sweep the lows. This is the key here. And the second most important thing is that we swept both the lows. And then what came next? Price went above. Price held this level, chopped around here, and then we went above and we made a new high. That's the rally that we've been looking for. So it's a good sign that BTC is taking more time here, and I prefer more time. Same goes here. Price above, went down, went above, and then we created a range here. We created a range here. Price went above, consolidated, came down, and then where it finds support into this low of this candle. Not even touched it. Quite bullish move. That is powerful. So we can range here in another 2-3 days. Maybe 8th को हम we'll make a new move. So it's all lies on the move, the price action. I'm still not bearish here. We are creating space. जैसे कि we have created spaces here. Price dumped into that space, held it, went above. So अगर ये price, if that price, जैसे COVID dump में, I'll show you one thing. If that price hold above it, like if it come above it and held it, that's where the time that you should be in the market. It doesn't. It come back. It breaks that low. That was the shot that everybody's been waiting for, and it played out perfectly fine. Because I think that was a massive drop in the price. There, the same scenario. What happened here? Price created some structure here, dropped. I would like to see how the price behaves, and that follows the sign of ETH, in my opinion. Here as well, price created this and then go up and then drop, created another low, and then we range here, and then price broke out of the range. So this is all is a part of the BTC move, and this happens a lot, और ये हमेशा होता रहा है. यहाँ भी BTC dropped here, and then what happened? We went below these lows, dropped below, and then we went above, dropped, but still these lows served as a potential buy zones. So I don't think so there is a possibility here again. We created a range here, price went above, and then price break below it. Still we're not breaking the structure. That's the key here. Filling the voids is the key.
Yes, the void's the key here. So all the best.